Guys, you can start this session. Hi friends, good morning. I welcome you all on behalf of FTAP. Today's FTAP is the fifth session on GST assessment and audit by Dr. Arpit Haldia. Just to tell you about FTAP, FTAP is Foundation of Tax and Accounting Professional. It started in 2015 as a study group with an aim to form a group of fellow-minded professionals, to form a group for quality knowledge sharing, to help each other and grow together. I am sure everyone knows about Dr. Arpit Haldia. He is CA, DISA, CS, LLB, PhD, as well as ICWA. He is an author on various books on GST, as well as he is taking various sessions on the GST also across all platforms. I welcome Dr. Arpit Haldia to start with his deliberation on today's webinar, in fact, on GST assessment and audit. Over to Dr. Haldia. Thank you, Manishji. And I would like to thank FTAP for giving me the opportunity to share my views on assessment and audit under GST. As we all know that the annual return and reconciliation statement for 17-18, the due date has already been gone and most of us have filed the required forms. And now, once the COVID-19 restrictions are over, the department would be starting with the assessment and audit part for 17-18. So it's an apt time to start the discussion on relevant sections. I have taken sections from section 61 to section 66, which would be more relevant for us in the coming time. So just giving a brief of today's session, section 61 to 66. 61 relates to scrutiny of returns, 62 for assessment of non-filer returns, 63 assessment of unregistered person, 64 summary assessment, 65 audit by tax authority, and 66 is special audit. Before deliberating on these sections, let's have a discussion on the definition of assessment, which is defined by clause 2, clause 11 of CGST Act. It has been defined, assessment has been defined as, it means determination of tax liability under this act and includes self-assessment, reassessment, provisional assessment, summary assessment and best judgment assessment. तो आप देखेंगे कि assessment की definition के दो parts हैं and it's an exhaustive definition which is covering means and includes. तो पहला part है determination of tax liability under this act. ये सिर्फ determination की बात कर रहा है and this determination of tax liability goes to section 73 and 74 of CGST Act. And then it moves on to say and includes self-assessment section 59, reassessment, provisional assessment section 60, summary assessment and best judgment assessment, which is section 62 and 63. So this is the definition of assessment under GST. Now coming back to relevant sections, जैसे हम देख सकते हैं section 61 से 66 हमने लिया है. अब इसमें जो खास बात है ये देखने की है कि section 61 only pertains to scrutiny of returns. It only tells about the process which has to be taken for scrutiny of returns, and in case any discrepancy is found out by the officer, the relevant action cannot be taken under section 61. It has either to be taken under section 65, 66, 67 or under section 73 and 74. Whereas section 62, 63 and 64 are sections where there is an inbuilt provision for passing of an assessment order. And section 65 is audit by tax authorities and 66 is special audit. ये दोनों section वापस से वो दोनों section है जहाँ पे audit हो सकती है section 65, 66 में, पर जो action है that has to be taken under section 73 and 74. So what we can say is section 6 out of these 6 sections, 62, 63 and 64 relates to passing of an assessment order under this section only, and section 61, 65 and 66 only provides a process, and in case any discrepancy is found out, relevant action has to be taken under section 65, 63 or 67. That is again only a process.
ultimately the action has to be taken under section 73 and 74. So coming to the first section, that is section 61, scrutiny of returns. इसका relevant rule अगर देखेंगे तो relevant rule है rule 99 और 3 फॉर्म से ASMT 10, 11 and 12 प्रोसेस हुई है. पहले नोटिस दिया जाएगा, assessee would reply in ASMT 11. ASMT 12 is where the audit proper officer finds that the reply by the assessee or the taxpayer is proper. He would issue order under ASMT 12, but if he finds that the reply is not proper and if he needs to take further action, he would proceed ahead under 65, 66, 67 or 73 or 74. So starting with section 61, this is the bare provision of section 61. I have highlighted certain key issues under section 61 and key terms, which is say first is scrutinize, second is return, third is registered person, and fourth is correctness. Along with it, if we go through rule 99, here also I have highlighted certain key issues and which we would be discussing and deliberating while discussing section 61 along with rule 99. अगर मैं key observations की बात करूं तो सबसे पहले section 61 is applicable only on registered person. How come? If we see section 61, it says the proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by a registered person. So the first thing is, for application of section 61, the person should be a registered person. After the first condition, let's come to the second condition. Notice under section 61 can only be issued if the return has been filed by the registered person. If no return has been filed by the registered person, then action cannot be taken under section 61. If we see a relevant part of section 61, what it says, the proper officer may scrutinize the return which has been filed. And if we see relevant provision of rule 99, what it says is, where any return furnished by a registered person is selected for scrutiny. So the second condition which has to be met is that the return should have been filed by the registered person. Now coming to the third part, as rule 99 says, where any return furnished by a registered person is selected for scrutiny. So what would be the mode of scrutiny, selection of scrutiny? If we see parameter provision of section 143 of Income Tax Act, वहाँ पे क्या होता है? The government gives certain guidelines for selection of case for scrutiny, and on the basis of those guidelines, the cases are selected, and then the assessment proceedings are initiated. And once the assessment proceedings are initiated, the assessment order is passed under section 143 itself. पर GST में scrutiny of returns का mode कुछ different रहेगा. ये question GST Council की meeting में भी discuss हुआ था कि what should be the mode of selection of scrutiny. So what I have chosen is, I have reproduced the minutes of 6th GST Council meeting, where the issue was discussed that how the returns would be selected for scrutiny. The relevant part is the observation of CCT Karnataka, which is the first para of this slide. What it says is, CCT Karnataka further clarified that while the IT system would throw up the suspicious cases requiring scrutiny, the officer would take into account all relevant factors and might issue notice for scrutiny in select cases as per the requirement. He added that if notice was issued only based on computer analysis, the court might strike it down on the ground of lack of application of mind. तो अब आप देखेंगे पहले क्या बोल रहा है कि IT system would throw up the suspicious cases requiring scrutiny और ऑफिसर उसको taken account for करते हुए फिर notice of scrutiny का issue करेगा. तो हम आज की अगर बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, so the same thing is happening. The IT system is throwing the reports like DGgram, या फिर हम बोलें कि 3B versus 1 की जो differences का जो notice आता है, या फिर 3B versus 2A के जो ITC का notice आता है. These are all suspicious cases thrown up by the IT system.
जब ऑफिसर के पास वो रिपोर्ट्स आती हैं उनके बेस पे वो सेक्शन 61 का नोटिस इश्यू करता है. So the mode of there would be no specific mode for selection of scrutiny. ऑफिसर पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से केसेस को स्क्रूटनी में सेलेक्ट करना चाहता है और उसी के बेस पे वो नोटिस टैक्स पेयर को इशू करेगा. अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि चलिए रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट करना है, तो व्हाट इज मेंट बाय रिटर्न. यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी जो हम फाइल कर रहे हैं जीएसटीआर 3B हम फाइल कर रहे हैं, जीएसटीआर 1 हम फाइल कर रहे हैं, आईटीसी 04 हम फाइल कर रहे हैं. तो व्हाट इज मेंट बाय रिटर्न, तो अगर हम देखेंगे तो क्लॉज 2 सब क्लॉज 97 जो है वो रिटर्न की डेफिनेशन देता है, which defines returns as any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under this act or the rules made thereunder. तो ये सिर्फ एक जनरल डेफिनेशन देता है कि रिटर्न्स एज एनी प्रिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय और अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर. तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज मेंट बाय रिटर्न, तो क्या जीएसटीआर 1 एक रिटर्न है? अगर हम सेक्शन 37 को देखेंगे which prescribes filing of GSTR 1, it says it is a statement of outward supplies. It does not fall under the category of returns. So broadly, what falls under the category of returns is section 39, which prescribes filing of GSTR 3B or GSTR 3, composition return. Section 44, it is annual return. And section 45 is the final return, which is filed after the cancellation of registration within 90 days of cancellation of registration. So Arpit ji, I would be interrupting. So this is a message for all the audience. Myself, CA Piyush Goyal, Chairman FTAP IDT Committee. That if someone has any question during this deliberation, they can raise their question in the question and answer tab, or they can also raise their hands so that we can take up your question and directly give it to the speaker to answer them, right? Yes, Sir, sir. you can continue, sir. अब चीज ये आती है कि मान लीजिए कि मैंने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया, मैंने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया. नाउ द प्रॉपर ऑफिसर वांट्स टू हैव और स्क्रूटनाइज माय जीएसटीआर 1. So can he issue a notice under section 61 stating that please provide me particulars of GSTR 1 without selecting the return of the relevant month? Say for the month of October 2019, I have filed GSTR 3B, I have filed GSTR 1, but some of the entries under GSTR 1 are suspicious and he wants to have a look at those entries along with the proper records. So can he give me a notice under section 61 specifying details of GSTR 1 without selecting the return relevant return for scrutiny? Now if we again go back for section 61, what it says, the proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person. These are covering two limbs. One is the return and second is the related particulars furnished by the registered person. So what I think is the 3B is covered under return and the GSTR 1 is covered under related particulars furnished by the registered person. Now the officer has to have a look on the related particulars which is covered under which GSTR 1 is covered. So what rule 99 says is where any return furnished by a registered person is selected for scrutiny. So first the process would be the officer would be selecting the return first and then only he can extend his jurisdiction on the related particular under which GSTR 1 is covered. So till now we have discussed three parts. First, the section is applicable on registered person. Secondly, he should have filed his return for that particular period. Third, there is no specific mode selected for scrutiny. Only the system would throw up the cases for selection of scrutiny. And fourth is if the officer needs to have a look or scrutinize my related particulars furnished, then the return has to be selected first. Now moving ahead to rule 99. Sorry to disturb Dr. Haldia. So there are a couple of questions related to this. Ideally, we can take it up.
So there is a question from Abhiro. He is asking, can you please refer to provision in GST law wherein it mandates proper officer to apply his judgment before issuance of judgment, that is not plainly issue on the basis of computer reports? Yes, yes. I am going to that topic only, rule 99. So can I continue now? Yes, yes, you can continue. Now we move ahead with rule 99. What it says is, where any return furnished by a registered one selected for scrutiny, the proper officer shall scrutinize the same in accordance with the provision of section 61 with reference to the information available with him. That means कि अगर वो मेरा रिटर्न स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट भी करते हैं और वो मेरे रिटर्न रिलेटेड पर्टिकुलर्स को स्क्रूटनाइज भी करते हैं, so it has to be scrutinized with reference to information available with him. This is the first case, first condition. And the second condition is, and in case any discrepancy, that is, if the proper officer finds any discrepancy, he shall issue a notice to the said person in ASMT 10 informing him of such discrepancy. मतलब 3 लेम में पहला वो रिटर्न स्क्रूटनाइज करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, तो उसको वेरीफाई जो करेंगे वो उनके पास जो इंफॉर्मेशन है उससे ही वेरीफाई करेंगे. उसके बाद वो डिस्क्रिपेंसी उसमें से निकालेंगे और उस डिस्क्रिपेंसी को ASMT 10 में स्पेसिफिकली स्टेट करेंगे और उसी पे ही असेसी से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे. देखिए बहुत बड़ा डिपार्चर है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स रिटर्न्स. इनकम टैक्स स्क्रूटनी, इनकम टैक्स स्क्रूटनी में क्या होता है कि रिटर्न पहले सिलेक्ट होता है, उसके बेस पे एक जनरल नोटिस आपको दिया जाता है कि आपको ये 10 रिकॉर्ड सबमिट प्रोवाइड करने हैं हमको. उन 10 रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के बाद में एक स्पेसिफिक नोटिस आता है. पर रूल सेक्शन 61 एंड रूल 99 ऑफ GST मेक्स अ बिग डिपार्चर फ्रॉम दैट प्रैक्टिस. व्हाट इज सेड इज, पहले रिटर्न सेलेक्ट होगा स्क्रूटनी के लिए, वो ऑफिसर के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे ऑफिसर उसको स्क्रूटनाइज करेगा, फिर डिस्क्रिपेंसी निकालेगा और डिस्क्रिपेंसी को स्पेसिफिकली ASMT 10 में इशू करेगा और उसी पे ही असेसी से रिप्लाई सीक करेगा. दे कैन नॉट बी ए केस जहां पे ASMT 10 में आपसे बोला जाएगा कि आप पहले 3 रिकॉर्ड लेके आइए फिर हम आपको स्पेसिफिक नोटिस देंगे. तो चीज आती है व्हाट इज मेंट बाय इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ हिम, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ हिम. तो उसके लिए हालांकि ये टर्म लॉ में डिस्कस नहीं है, पर अगर देखेंगे तो केरला हाईकोर्ट के बेंच ने, डिवीजन बेंच ने यूनाइटेड मर्केंटाइल कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स में ये बोला था कि अ डिटेल बिकम्स अवेलेबल टू द इनकम टैक्स ऑफिसर व्हेन इट इज इन द पेपर्स फाइल्ड बिफोर हिम. मतलब वो डिटेल अवेलेबल तब मानी जाएगी जब वो ऑफिसर के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है. तो जो ऑफिसर को ASMT 10 देना है उसमें ऐसा नहीं कर सकता कि वो असेसी से कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा, जो उसकी फाइल में डिटेल अवेलेबल है उसी के बेस पे उसके रिटर्न से स्क्रूटनाइज करके डिस्क्रिपेंसी निकाल के ASMT 10 में वो नोटिस दिया जाएगा. अब जो नोटिस दिया जाएगा उसका स्कोप क्या होगा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दैट नोटिस, और स्क्रूटनी क्या जो एंटायर प्रोसीडिंग है उसका स्कोप क्या है. So if we go back to section 61, it says the proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return. So the scope of scrutiny is to verify the correctness of the return. Now what is meant by correctness? क्या correctness सिर्फ arithmetical accuracy है? क्या correctness सिर्फ prima facie checking है? It does not include checking of legality of the claim. Again, the term has not been defined. But in one case, Union and Others versus Naresh Chandra, the term correctness was discussed, and it says in its ordinary meaning and substance, correctness is compounded of legality and propriety, and that is that which is legal and proper is correct.
मतलब अगर आपको सेक्शन 61 में करेक्टनेस, सेक्शन 61 में आ रहा है नोटिस टू वेरीफाई द करेक्टनेस, it means it would be covering in its ambit both the legality of the claim and whether the claim is proper. मतलब वो आपसे जब करेक्टनेस चेक करेंगे तब आपकी लीगैलिटी भी देख सकते हैं कि क्या आपने सेक्शन 16, 17, 18 क्या आपका क्लेम प्रॉपर था इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड द रूल्स, क्या आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल थी. So entire thing can be verified for the purpose of checking the correctness of the return. तो यहाँ पे आते हैं कि चलिए रिटर्न सेलेक्ट हो गया स्क्रूटनी के लिए, ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, उसके बेस पे उसने वेरीफाई किया, उसके बाद 3B अवेलेबल था, उसके बाद 2A अवेलेबल था, उसके बेस पे उसने देखा कि आपके दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है और वो डिफरेंस देते हुए उन्होंने नोटिस इशू कर दिया ASMT 10 में वो डिस्क्रिपेंसी के साथ में. So what is the time limit available for furnishing of reply? Rule 99 says, it says not exceeding 30 days from the date of service of the notice or such further period as may be permitted by him. हम इस ये जो लैंग्वेज है not exceeding 30 days from the date of service of the notice और such other period as may be permitted by him, इसकी जो ये लैंग्वेज है इसकी लीगैलिटी को थोड़े से जब हम सेक्शन 61 के सबसेक्शन 3 पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे. और प्रेजेंट हम ये मानते हैं कि असेसी को या तो 30 डेज में या फिर सच फर्दर पीरियड एज मे परमिटेड में रिप्लाई करना है. तो दिस इज सेक्शन 61(1) एंड रूल 99(1). इसके जो इश्यूज हैं जो हमने एक एक करके वैसे ही डिस्कस कर लिए हैं, ये मैंने नोट डाउन करे हैं और ये पीपीटी में आपको मिल जाएंगे. नाउ कमिंग टू रूल 99(2). असेसी या टैक्स पेयर को ASMT 10 में नोटिस मिल गया डिस्क्रिपेंसी का. नाउ ही हैज two options available with him. First, he can accept the discrepancy. He said, yes, I admit that there is an error in the return filed by me and I accept the discrepancy. Second है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अपना एक्सप्लेनेशन फर्निश करता है. तो रूल 99 सब रूल 2 ये बोलता है, the registered person may accept the discrepancy mentioned in the notice issued under sub rule 1 and pay the tax, interest and any other amount arising from such discrepancy and inform the same or furnish an explanation for the discrepancy in ASMT 11. तो पहला ऑप्शन या तो वो एडमिट कर ले और एडमिट करके टैक्स इंटरेस्ट या जो भी दूसरा अमाउंट है वो पे कर दे, या फिर ASMT 11 में प्रॉपर ऑफिसर को कम्युनिकेट कर दे. सेक्शन 61(2) ये बोलता है कि अगर टैक्स पेयर ने कम्युनिकेट किया अपने प्रॉपर ऑफिसर को और उनको वो एक्सेप्टेबल लगा तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म कर देंगे कि योर एक्सप्लेनेशन हैज बीन फाउंड एक्सेप्टेबल and no further proceedings or action would be taken against you, and the same would be informed in as rule 99(3) says in GST ASMT 12. तो अगर लें कि ASMT 10 में रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिस दिया जाएगा, असेसी के सामने दो ऑप्शन होंगे, either he can accept and pay the tax, interest or any other amount. सेकेंड ऑप्शन होगा कि वो अपना एक्सप्लेनेशन फर्निश करे. जब वो अपना एक्सप्लेनेशन फर्निश करेगा तब ऑफिसर के पास दो ऑप्शंस होंगे, either he can accept and drop the proceedings and issue him the order under GST ASMT 12. But what happens if either the explanation is not accepted by the officer और जहां पे असेसी बोलता है कि मैं अपनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दूंगा, एंड इफ ही इज नॉट able to pay or if he does not pay. तो सेक्शन 61(3) पे हम आते हैं क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल सेक्शन है और सारी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे जाकर के कंक्लूड होती हैं जब ऑफिसर को असेसी का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं मिलता या फिर असेसी ने जहाँ पे टैक्स बोला था वो पे नहीं कर पाता. अगर हम इसको पढ़ते हैं, इन केस नो सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर or such further period as may be permitted by him,
मतलब जहां पे असेसी ने एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं किया, और where the registered person after accepting the discrepancies fails to take the corrective measure in his return for the month in which the discrepancy is accepted. मतलब जिस मंथ में उसने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करी है उस मंथ के रिटर्न में वो करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाता है, तब the proper officer may initiate appropriate action including those under section 65, 66, 67 or proceed to determine the tax and other dues under section 73 and 74. अगर हम वापस यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लॉज 2 सब क्लॉज 11 में जो असेसमेंट की डेफिनेशन थी which meant determination of the tax payable, तो ये देखिए सेक्शन 73 74 which says to determine the tax and other dues under section 73 और section 74. अब दो चीजें यहाँ पे हमको समझनी जरूरी है। पहली चीज तो सेक्शन 61 ये बोलता है कि where the registered person after accepting the discrepancies fails to take the corrective measure in his return for the month in which discrepancy is accepted. मतलब मान लीजिए मेरे को जनवरी 2020 में ऑफिसर ने कोई ASMT 10 दिया था, नोटिस दिया था, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को ये गलती है, तो 61(3) बोलता है कि जनवरी 20 के ही रिटर्न में मेरे को उसका करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर मैं जनवरी 20 के रिटर्न में उसका करेक्टिव एक्शन नहीं लेता हूं, then the proper officer is free to initiate appropriate action under section 65, 67 या फिर 73, 74 for determination of tax. पर सेक्शन 61 तो बोलता है कि जनवरी 20 के रिटर्न में मेरे को करेक्टिव एक्शन लेना है, पर सेक्शन 39 अगर हम देखेंगे, सेक्शन 39(9) which says कि अगर किसी जने को कोई रिटर्न में गलती मिलती है तो वो नेक्स्ट ईयर के सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट तक उसको अपने रिटर्न में करेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट for the discrepancies due to any anti-evasion action, scrutiny or inspection. सेक्शन 39(9) अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बोलता है कि omission or incorrect product discovered as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by tax authorities. तो अब देखिए सेक्शन 61 तो बोलता है कि आप अपने रिटर्न में करेक्टिव एक्शन ले लें, पर सेक्शन 39(9) जो है उसको डिबार करता है कि नहीं, आप उस रिटर्न में का करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते। So there is an anomaly between section 61 and section 39, where 61 is asking to take the corrective action in the return, but section 39 is not allowing the same by virtue of provision of section 39(9). पहली चीज तो ये। दूसरी चीज हम देखेंगे तो यहाँ पे 61 बोल रहा है कि इनके नो satisfactory explanation is furnished within a period of 30 days of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted. मतलब 30 days या फिर such further period as may be permitted. यहाँ पे वो 30 days से कम का समय की बात ही नहीं कर रहा है कि within a period of within the such period not within such period permitted by the officer not less than 30 days or such further period as may be permitted by him. अगर हम सेक्शन 61 और रूल 99(1) की लैंग्वेज को अगर कंपेयर करते हैं तो इट सेज within such time not exceeding 30 days from the date of service of notice. अब यहाँ पे not exceeding का मतलब आता है कि it shows that somewhere the power is being given to the officer of giving a time which is less than 30 days. But the term not, the words not exceeding has not been used under section 61(3). It says that a flat period of 30 days has to be given, and if the officer finds proper, he may extend such time, but minimum period of 30 days has to be given. तो यहाँ पे वापस से नोटिस का टेम्पलेट जो है वहाँ पे इशू है, whereas section 61 says within a period of 30 days and rule 99(1) says not exceeding 30 days, मतलब वो चाहे तो उससे कम का भी समय दे सकते हैं। अर्पित जी, इसमें मैं ले रहा हूँ। हाँ जी, एक उदित जैन जी का क्वेश्चन आया है कि जो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स है, विल दैट बी टेकन आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और इट वुड बी विद इन द ईयर? नहीं, आप देखिए जब भी आपने जिस पीरियड का रिटर्न फाइल कर दिया,
क्योंकि Right. यहाँ पे अगर हम रूल 99 देखेंगे तो इट सेज कि where a return is selected for scrutiny, where any return furnished by a registered person is selected for scrutiny. तो मेरा रिटर्न की पीरियोडिसिटी तो मंथली है. अगर मैंने जनवरी 20 का रिटर्न फाइल कर दिया तो असेसिंग ऑफिसर इज वेल विद इन हिज पावर टू इशू द नोटिस फॉर दैट जनवरी 20 रिटर्न आल्सो. Okay. So once the return has He been does not have filed, to wait for completion of the financial year. right. So when you have filed the return, which is GST or 3B, then the officer is in all power to send you the notice for the scrutiny, right? Yes, yes. So I am also taking one more question which has been asked by Ms. Tripta, that is there any court judgment which says 3B is not a return? So देखिए वो तो आर्प एंड कंपनी का था, उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ गया लॉ में रूल 61 में, और अगेन इट इज बिफोर द कोर्ट्स दैट वेदर 3B इज अ रिटर्न और नॉट. तो अभी हम फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट डिस्कशन ऑफ सेक्शन 61 रूल 99, आई एम सब्जेक्ट टू व्हाटएवर डिसीजन कम्स इन फ्यूचर. For this discussion, we are treating GST 3B as a return. okay, fine, thank you. तब देखिए ये सेक्शन 61 और रूल 99 है. अगर हम ब्रीफली इसको पूरे ओवरव्यू को डिस्कस करें कि ये प्रोसेस कैसे फॉलो होगा. फर्स्ट कंडीशन है देयर शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन. सेकंड इज ही शुड हैव फाइल्ड अ रिटर्न. रिटर्न कैन बी एनी रिटर्न व्हिच कैन बी 3B आल्सो फॉर अ मंथ. रिटर्न फाइल करने के बाद में द असेसिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ हिम finds it proper to scrutinize the return and finds the discrepancy, and the discrepancy, specific discrepancy, is communicated under the form ASMT 10. Once the discrepancy is communicated under ASMT 10, the assessee has two options. One, either he admits to pay the tax, which is subject to provision of section 39(9), where there is some discrepancy between section 61 and section 39. And second, he furnishes an explanation in ASMT 11. Once he furnishes an explanation in ASMT 11, the officer either can accept the explanation and issue ASMT 12. But if he finds that the explanation is not proper, or even after admitting you have not paid the tax, the proper officer has to proceed ahead either under section 65, 66 or 67. 65 is regarding departmental audit. 66 is regarding special audit by the chartered accountant or cost and management accountant. 67 is regarding inspection, search and seizure. But still these three are not assessment section. Ultimately all these three proceedings, even if undertaken after section 61, they have to go under section 73 and 74. Or the assessing officer can directly move into section 73, 74 after issuing notice under section 61. There is a question from Achal Kapoor. She is asking what is the maximum time period for section 61? देखिए section 61 does not prescribe any time limit. It only says how to scrutinize the return, and whatever action has to be taken, it has to be taken under section 73 and 74. So ultimately any proceeding initiated under section 61 that would be bound by the time limit provided under section 73 and 74, that is 3 years or 5 years from the due date of furnishing of annual return. Right. And there is another follow-up questions from Jayesh. He is asking whatever has been assessed, do the assessee has the option to correct till September next the monthly return where it has been assessed? See, the section 61 says you can correct it, but then section 39(9) debars you specifically. So there is a lacuna in the law, in my view, and it has to be corrected. It has to be provided, and the word scrutiny has to be either deleted from section 39(9). Manishji, there are a few questions from the audience. I would, if we can allow participants to speak. Pardeep ji, if you have any question, Pardeep Singh Negi ji raised the hand. Pardeep Singh Negi ji, if you have any questions, you can ask. So whether I can select the stop sharing for a moment? Yeah, for a moment. Yes. Pardeep ji,
Umesh ji, if you have any question. I think they are on mute mode. In the meantime, I take one question. There is a question from Rajiv ji. So if R1 is a statement and 3B is a return, then it is right to infer that a difference in R1 versus book is not consequential if 3B versus books is correct. क्या बोल रहे हैं सर? So if R1 is a statement and 3B is a return, then it is right to infer that a difference in R1 versus books is not constitutional if 3B versus books is correct. हाँ ठीक है ना, पर ऑफिसर के पास तो GST 1 और 3B है आपके, तो उनके बेस पे वो डिस्क्रिपेंसी देगा का नोटिस इशू करेगा ना. उसके बाद जब आप अपना एक्सप्लेनेशन फर्निश करेंगे ASMT 11 में कि मेरा GST 1 में कोई एरर रह गया था, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट फर्निश प्रॉपर एंड माय बुक्स आर मैचिंग विद द 3B and I have discharged entire liability, the officer can drop the proceedings in ASMT 12. Right. Umesh Malik ji, if you have any question you would like to ask. Anuj Jain, Tripta. I think no one is asking questions. Hello. Yeah, Tripta. Sir, I want to ask, as a result of scrutiny, if one want to correct the return, how he will do it practically? Lacunae law is the other thing, but how we do it practically? Ma'am, if we keep aside section 39.9, then you have to correct in the month in which you have accepted the discrepancy. So if you have received a notice in the month of January 2020 and you admit that there is an error, Yes. then it has to be corrected in January 20, subject to the fact that the time limit under September should not be passed. And if that is not possible, you have to pay through DRC 03. Okay, we can move forward. DRC 03. This is a correction. Yes. अगर आपका मान लीजिए कि नोटिस जो है it is for December 19, so you can very well correct in January 20. But if the notice is pertaining to say 17-18, Yes. then it cannot be corrected in this return. On a holistic view of section 39 and 61, then the better option would be to correct the mistake to DRC 03, pay the balance amount to DRC 03. Thank you. Yes, So we can one move more forward. question. Arpit ji, we can move Yeah. forward. I'm Okay. taking one question. Yes. It is from Mr. Davendra Singh, Nagpal. He's saying that suppose an associate deposits the tax and interest in response to the notice under ASMT 10 and he has filed the reply in ASMT 11. So whether he has to file DRC 3 also or just deposit the tax and interest is sufficient? No, if he has deposited through DRC 03 and submit the same in ASMT 11 that I have deposited, then no need to furnish separately under DRC 03. No need to furnish DRC 03 separately to the assessing officer. Okay, so the I under the ASMT 11 mentioning the fact that DRC 3 has been filed is enough, right? Enough. That is enough. Okay. You please continue, sir. Okay. So now we would be moving ahead to section 62. अब देखिए अगर section 62 की heading देखेंगे, that was speaking for scrutiny of returns. Now 62 is speaking assessment of non-filers of return. अब जो है जो section 62 है, that is the complete code in itself for the purpose of assessment of non-filer of returns. It does not have to go to 73 or 74 for creating the demand and generating the demand. It is self-sufficient in itself for assessment wherein the returns have not been filed by the registered person. Now coming to the relevant section forms and rules, section is 62 along with section 46. Applicable rule is rule 100 along with rule 142. Applicable forms is GSTR 3A, ASMT 13, DRC 07, DRC 08. These all we will be discussing in the due course. This is only a brief precursor about the overview of the applicable section rules and forms. Now when we come to the
Arpit ji, I'm interrupting. I am seeing Mr. Pradeep, Anujan, Tripta, 1+60 raising their hands. So I would request them to post their question here in Q and answer window so that we can take it up with Mr. Haldia. Thank you. Yes, sir. You can continue. Yes. Now coming to the bare provision of section 62. It starts with notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or 74. The terminology speaks that if section 62 says something and section 73 and 74 says otherwise, provision of section 62 would prevail over 73 and 74. Provision of section 73 and 7 over the provision of section 73 and 74. So 62 prevails over 73, 74 if there is anything contrary in both these two sections. This is a starting phrase. Now it starts with where a registered person fails to furnish a return under section 39 or section 45. Again, the first condition is the person should be a registered person. Second, he should have failed to furnish the return under section 39 or section 45. Section 39 is GST 3P and section 45 is final return. Arpit ji, sorry, I'm Now- interrupting you. Haji. Bandwidth at your end is very low. May I suggest that you switch off your video so that bandwidth can be is improved. Okay. Thank you. Is it visible? Yes. Yes, visible. Yeah, it's visible. Thank you. So first condition is there should be a registered person. Second, he should have failed to furnish return under section 39 or 45. 39 is GST 3P and 45 is the final return. Even after the service of notice under section 46. So before proceeding under section 62, the registered person should have failed to furnish the return in section 39 and there should have been a notice being issued under section 46. What section 46 says is, where a registered person fails to furnish return under section 39 or section 44 or section 45. It covers three sections, section 46, 39, 44 and 45, but section 62 is only applicable if the returns are not furnished under section 39, 45. So if an annual return is not furnished, although the notice would be issued under section 46, but assessment proceedings cannot be taken under section 62. 62 only provides for section 39 and 45. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब है, इसकी सीधी सीधी बात ये भी हो सकती है कि मैंने अपने 3B तो फाइल कर दिए हैं पर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, और एनुअल रिटर्न इज ओनली अ मर्जर ऑफ एंटायर इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन फर्निश्ड इन द रिटर्न्स vis-a-vis the my books of accounts. So there is no additional tax liability which has to be paid. Revenue deems that there is no additional liability which has to be paid through annual return. It is only a merging of information and comparing with the returns filed vis-a-vis the books of accounts. Therefore, section 62 is only applicable for 3B or the final return. A notice shall be issued requiring him to furnish such return within 15 days in such form and manner as may be prescribed. तो नोटिस जो सेक्शन 46 में आएगा उसमें 15 दिन का समय दिया जाएगा कि आपको इस नोटिस के मिलने के 15 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करना है. तो हम रूल 68 जो नोटिस की बात करता है, वो नोटिस क्या बोलता है? A notice in form GST 3A shall be issued electronically to a registered person who fails to furnish under section return under section 39, 44, 45 और 52. अब देखिए रूल 68, 39, 44, 45 या 52 पे भी लगता है. 52 इज रिटर्न फॉर TCS, जहाँ पे TCS के जो रेलेवेंट रूल्स हैं वो उसको कवर करते हैं. तो फॉर द पर्पस ऑफ 62 हम ये मानते हैं कि 46 और 68 सिर्फ 39 और 45 को बोल रहे हैं. तब 62 पे वापस आते हैं तो अब ये बोलता है कि the registered person has failed to furnish return even after service of notice.
the proper officer may proceed to assess the tax liability. अब आप ये देखें कि 46 का नोटिस अगर आता है तो उसके बाद 62 वापस और कोई नोटिस देने की बात नहीं करता कि आपने एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, उसको सेक्शन 46 का नोटिस दिया गया, 15 दिन का समय दिया गया, पर अब उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तब 62 ये नहीं बोलता कि आप वापस से उसको नोटिस दो इन्फॉर्मिंग व्हाई प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 62 शुड नॉट बी इनिशिएटेड. It straight away says the proper officer may proceed to assess the tax liability. So a notice under section 46 is a precursor, or say we can say is equally a notice under section 62, that in case of any failure to file return, proceedings under section 62 would be issued consequentially without any further intimation. तो हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि in case notices have been received under section 46 and returns are not being filed within 15 days, a consequential order under section 62 might be waiting from the officer. अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि where is the principle of natural justice? कि ठीक है, आपने मेरे को बोला था कि सेक्शन 46 का दिया था कि 15 दिन में नोटिस 15 दिन में आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया और आपने सीधा असेसमेंट कर दिया, तो वेयर इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सेक्शन 62 में कैसे इनकलकेट हुआ है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग वंस वी फिनिश सेक्शन 62. फॉर द टाइम बीइंग हम ये मान रहे हैं कि देयर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, ही हैज नॉट फर्निश्ड इट अंडर सेक्शन 3945, अ नोटिस हैज बीन सर्व्ड अंडर सेक्शन 46 and the registered person has still not filed return even after expiry of 15 days. So the proper officer may proceed to assess the tax liability. Now how the tax liability would be assessed? The tax liability will be assessed on the basis of best of his judgment, taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered. अब देखिए यहाँ पे ये सेक्शन 3 चीजें बोल रहा है. जो असेसमेंट होगा वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा. वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे होगा? It would have to take into account all the relevant material which is available or which he has gathered. वापस वही बात आती है, what is meant by available and what is meant by gathered. Available हमने बोला था which is on the file of the officer. Gathered मतलब which he has collected through his sources. मैंने इस प्रेजेंटेशन में स्पेसिफिक यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड डिसीजंस दिए हैं. मैं सिर्फ उनकी हेडिंग डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आपको जो प्रेजेंटेशन शेयर होगा तो आप उनको देख सकते हैं. फर्स्ट इज असेसिंग ऑफिसर नीड्स टू कंसीडर ऑल रेलेवेंट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड. सेकंड, जजमेंट शुड हैव रीजनेबल नेक्सस टू द अवेलेबल मटेरियल एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. अब यहाँ पे अवेलेबल मटेरियल से मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए एक असेसी है जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया था फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 20. अब ऑफिसर को उसका बेस्ट जजमेंट करना है. अब बेस्ट जजमेंट करते समय उसको अवेलेबल मटेरियल देखना है. अवेलेबल मटेरियल दो तरीके से हो सकता है जो हम बहुत डे टू डे लैंग्वेज में जिसको हम एसरटेन कर सकते हैं. पहला केस हो सकता है जहां पे उस एसएससी ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया था पर 3B फाइल नहीं किया, तो अवेलेबल मटेरियल उस केस में मेरा जीएसटीआर 1 हो सकता है. सिर्फ जीएसटीआर 1 नहीं और भी हो सकता है, बट जीएसटीआर 1 इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट which can be considered as available with the assessing officer. दूसरा, चलिए मैंने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया पर मेरे सप्लायर्स ने जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा. My 2A GSTR 2A would be auto populated on the basis of GSTR 1 filed by my suppliers. So the GSTR 2A is also a material available on record. And when the section says that the best judgment has to be passed taking into account all the relevant material, then there should be a reasonable nexus to the available material also. There can be a case कि मेरे GSTR 2A में परचेज आ रही थी मान लीजिए 1 लाख रुपए, और मेरे पुराने वाले जो रिटर्न गए हुए हैं उसमें भी दिख रहा है कि एवरेज परचेज जो आ रही है वो 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की आ रही है, एंड द टर्नओवर इज 1.5 टाइम्स ऑफ द परचेजेस बीइंग रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A. तो ऑफिसर क्या कर सकता है, उस परचेजेस के बेस पे मेरा टर्नओवर जो है वो 2 टाइम्स ले सकता है, 3 टाइम्स ले सकता है, बट इट कैन नॉट बी अ केस कि मेरी 1 लाख की परचेज है पर मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर असेस कर लिया. There should be a reasonable access, और
जब हम रीजनेबल एक्सेस की बात करते हैं तो हम ये भी माने कि देयर वुड बी अ गेस वर्क इन पासिंग अ ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट. इट कैन नॉट बी अ ऑर्डर विद इन 4 कॉर्नर्स की सर आपने तो 1 लाख था तो 1 लाख के ऊपर आप 10 रुपए भी गए तो आप कैसे गए, आप जा नहीं सकते थे. देयर वुड बी अ गेस वर्क, but that guesswork would ultimately would correlate with the material available on record. And next is basis of computation should be disclosed in the order. How my liability was ascertained on the basis of information available on record and what was the basis of computation. Next is if the estimate is bona fide and on rational basis, it cannot be disturbed by the court even though it might be on the most, it might not be the most appropriate. तो अगर कोई रैशनल बेसिस है एंड इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द ऑर्डर, वो चाहे मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं हो बट स्टिल इट वुड बी, क्योंकि देखिए हम बेस्ट जजमेंट में अगर नाम को देखें, इस टर्म को समझें, इट इज अ जजमेंट टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी एंड द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड. तो देखिए ये चीज आया कि क्या क्या चीजें ब्रॉड conditions हैं for passing of best judgment order. Now again coming back to the section 62(1), it says order should be passed to the best of his judgment, taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered, and issue an assessment order within a period of 5 years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates. तो जो मेरी ड्यू डेट होगी एनुअल रिटर्न की, उसके 5 साल के अंदर अंदर ऑर्डर कैन बी पास्ड अंडर सेक्शन 62. So if a person has not filed return for say for the month of March 18 and the order under section 62 can be filed from 5 years from the last date of annual return, which we suppose which was 5th of February, in some cases, in cases 7th of February. So within 5 years from 5th or 7th February as the case may be. Now coming to the second part, जो हमने बात करी थी कि how principle of natural justice has been. हाँ, हेलो हेलो, हाँ भैया जी. So I'm taking one question, Arpit. So this is from Mr. Rajendra Arora. He is saying that please link section 62 with SOP released by the department. Yes, sir. Section 62 with the SOP released by the department. Am I audible? हाँ sir. So for that, if you can just share me the SOP, तो मैं जब तक इसको कवर कर रहा हूँ तब तक वो SOP मेरे पास आ जाएगी, तो मैं तो स्क्रीन पे लेके शेयर कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा. हेलो पीयू जी. Yes. If you can share me the SOP जो सर्कुलर है वो मेरे को आप दे दें, तब तक मैं सेक्शन 62 कंक्लूड कर लूंगा और फिर उसको उसके साथ लिंक कर दूंगा. Okay, fine. Now coming to how the principle of natural justice has been inculcated in section 62, क्योंकि वहां पे तो 46 में नोटिस आएगा, 15 दिन का समय होगा, 15 दिन में रिटर्न फाइल नहीं किया तो 62(1) में उसका ऑर्डर पास हो जाएगा. Now it says, section 62 says, if a registered person furnishes a valid return within 30 days of service of assessment order under subsection 1, said assessment order shall be deemed to have been withdrawn. मतलब अगर मैंने 30 दिन के अंदर, मेरा जब ऑर्डर मेरे को मिला था उसके 30 दिन के अंदर, if the registered person furnishes a valid return, then the assessment order shall be deemed to have been withdrawn. But liability for payment of interest under subsection 1 of section 50 or for payment of late fees under section 47 shall continue. मैंने वैलिड रिटर्न फाइल किया, उस वैलिड रिटर्न के साथ में जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है और जो लेट फीस का पेमेंट है वो लायबिलिटी मेरी कंटिन्यू रहेगी, और जो भी कॉन्सिक्वेंशियल मेरी लायबिलिटी आती है दैट हैज टू बी डिस्चार्ज्ड. अब मान लीजिए कि मेरे को ऑर्डर मिलता है उसके 30 दिन के अंदर
मैं रिटर्न फाइल कर देता हूं. Once a return has been filed, the withdrawal order has to be made in DRC 08 and shall be electronically uploaded by the officer. तो क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल कर दिया and the proceedings have been dropped, the demand which was uploaded in DRC 07 has to be nullified through uploading of from DRC 08. And it has to be electronically uploaded by the proper officer. अब अगर हम हमारी फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर्म्स हमने दे रखे थे, तब देखते हैं GSTR 3A जो है ये मेरा नोटिस है फॉर रिटर्न डिफॉल्टर. 15 दिन का समय देंगे. इट हैज टू बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली. ASMT 13 जो है इट इज असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 and its summary has to be uploaded electronically in DRC 07. And if within 30 days of receipt of the order, a registered person furnishes the return, then the summary or withdrawal order has to be uploaded electronically under DRC 08, which would be having the effect of nullifying the demand which was uploaded through DRC 07 in my liability register. अब यहाँ पे मैं एक चीज और जो लिसनर्स हैं उनका मैं एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा ब्रीफली. अगर हम रूल 68 को देखते हैं तो इट सेज अ नोटिस इन फॉर्म GSTR 3A शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली. मतलब 3A का जो नोटिस है वो इलेक्ट्रॉनिकली इशू होगा. रूल 100 सब रूल 1 देखते हैं. It says the order for assessment made under subsection 1 of section 62 shall be issued in form GST ASMT 13. मतलब ऑर्डर मेरा ASMT 13 में इशू होगा. And a summary thereof shall be uploaded electronically in DRC 07. मतलब मेरा ऑर्डर तो मैनुअल होगा ASMT 13 में, उसकी समरी जो होगी that would be uploaded electronically in DRC 07. और जब मैं 100 सब रूल 2 पे जाता हूँ तो इट सेज कि समरी ऑफ द ऑर्डर 100 सब रूल 2 पे जाता हूं तो ये बोलता है विड्रॉल ऑफ ऑर्डर शैल बी मेड इन फॉर्म DRC 08 एंड शैल बी इलेक्ट्रॉनिकली अपलोडेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर. तो वापस से मेरा DRC 08 जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड होगा. तब यहाँ पे चीज आती है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिकली. मेरा 3A का नोटिस बोलता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली इशू होना चाहिए. मेरा 100 सब रूल 1 बोलता है कि ASMT 13 में ऑर्डर इशू होगा पर उसकी समरी इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड होगी. और जो विड्रॉल ऑफ ऑर्डर है वो DRC 08 जो है वो मेरा इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड होगा. मैंने एक ब्रीफली एक स्लाइड यहाँ पे शेयर करी है जो अलग अलग इंस्टेंसेस में इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड को अलग अलग रूल्स में यूज करा हुआ है. देखिए, the word electronically has not been defined anywhere in the act. There is section 169 which says about service of notice. और उस सर्विस ऑफ नोटिस में उन्होंने 6 मोड्स प्रिस्क्राइब किए हैं. One is physical handing over the notice. Second is through registered post. Third is through email. Fourth is uploading on the common portal. Fifth is through the newspaper, and sixth is in any of the above is not applicable through affixed. But nowhere it has been again defined what is meant by electronically. So मैंने वो rules एक बार share किए हैं which I would like to share with all of you कि अलग अलग जगह पे किस तरह से word electronically को use किया गया है और क्या हम किसी एक consensus पे आ सकते हैं कि what is meant by electronically. क्योंकि आज की तारीख में जो नोटिसेस आ रहे हैं 3A के फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स they are being received through email. Whether email is the correct mode of service of notice or whether the rule says so कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिकली होगा वो थ्रू ईमेल होगा. तो रूल 8 सब रूल 5 अगर देखते हैं तो एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली टू द एप्लीकेंट इन फॉर्म GST REG 02. रूल 8 सब रूल 5 की अगर देखेंगे तो वहां पे REG 02 की जो एक्नॉलेजमेंट है इट इज नॉट सर्व्ड थ्रू ईमेल, इट इज थ्रू पोर्टल ओनली.
अगर मैं रूल 100 सब रूल 1 पे आता हूँ, वहां पे ये बोलते हैं समरी देयर ऑफ, जो हमने अभी डिस्कस किया था, समरी देयर ऑफ शैल बी अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म DRC 07। रूल 138(8) जो ई वे बिल्स को लेके है, वहां पे ये आता है, ही शैल बी इन्फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली इफ द मोबाइल नंबर और ईमेल इज अवेलेबल। फिर सब रूल 142 सब रूल 1 पे अगर आएंगे, द प्रॉपर ऑफिसर शैल सर्व अलोंग विद स्टेटमेंट अंडर 73(3) और 74(3) a summary thereof electronically in form DRC 02। 142(6) देखेंगे, a summary of the order issued under this section shall be uploaded electronically in DRC 07। 142(7) में आएंगे, a summary of the rectification order or the withdrawal order shall be uploaded electronically by proper officer in DRC 08। तो अगर हम रूल 142 को अगर देखेंगे, तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड आ रहा है, it is somewhere reflecting that the notice has to be served through notice or the information has to be uploaded through common portal। क्योंकि जब मैं common portal पे upload करता हूँ, then a consequential intimation is sent to the registered email number, email ID and registered mobile number। तो हालांकि एक्ट में कहीं पे भी क्लैरिफाइड नहीं है कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिकली, बट अगर हम होलिस्टिक व्यू लेते हैं, अलग अलग सेक्शंस में जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द सेक्शन सेज दैट मोस्ट ऑफ द सेक्शंस शो द इंटेंशन दैट wherever the word electronically has been used, it has been commonly used to depict that the service or uploading should have been through the common portal। But it would be better that the government comes with a proper clarification on this issue, but until the clarification is issued, we have a ground whereby we can challenge that the notice served on email was not through the proper mode, where electronically has been said। अब coming to, जैसे हमने ASMT 13 की बात करी, जहां पे कहीं पे भी मोड ऑफ सर्विस नहीं लिखा हुआ था, so wherever the mode of service is not written, then section 169 which prescribes service of notice would come into play। तो जहां पे specifically electronically लिखा है, there section 169 would not come into play। There the notice has to be served mandatorily through electronically। And what is the term electronically? It has not been defined, but on a holistic view we can say that it has to be through common portal। और जहां पे भी word electronically या कुछ भी चीज नहीं लिखी हुई है, then the general provision of section 169 would come into play, which prescribes 6 modes of service of notice or order। So this is section 62। अब चीज आती है कि क्या, मान लीजिए मेरे को नोटिस इशू हुआ था, मेरा ऑर्डर पास हुआ और मैं 30 डेज में रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो does anybody has to extend the does anybody has a power to extend those period of 30 days? So there is one case wherein the assessee failed to file the returns within a statutory period of 30 days. He went before the High Court for extension of the period, and the decision of the High Court was, in my view, the statutory prescription of 30 days from the date of receipt of assessment order passed under section 62(1) has to be strictly construed against an assessee and in favor of the revenue. Since this is a provision in a taxing statute that enables an assessee to get an order passed against him on best judgment basis set aside, the provision must be interpreted in the same manner as an exemption provision in a taxing statute। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जहां पे उन्होंने बोला था, 2 साल पहले आया था, जहां पे उन्होंने बोला था कि इन केस इफ देयर इज एन एग्जेम्पशन प्रोविजन, इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड and the assessee has to prove that he is entitled to claim exemption। on that basis only this order has been passed कि अगर 30 दिन के अंदर ऑर्डर पास 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, तो फिर उस 30 दिन के पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। the only option left with the assessee is to challenge that order under appeal before the appellate authority। वहां पे जब जाएंगे तब हम उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि या तो नोटिस प्रॉपर सर्व नहीं हुआ था, या फिर जो कैलकुलेशन है दैट इज नॉट प्रॉपर। तो सेक्शन 62 का जो प्रोसीडिंग्स है, वहां पे टाइम लिमिट खत्म होने के बाद में उसका इम्पैक्ट बड़ा होगा। तो सेक्शन 46 है, जब नोटिस आता है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न का, एंड इन केस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन पीरियड 15 days, इट हैज ह्यूज रिपरकशंस ऑन द लायबिलिटी ऑफ द असेसी। हाँ पीयूष जी, वो दिया आपने सर?
वो मैंने Hello? आपको व्हाट्सएप करा है। अच्छा, आप देखिए उसको। ठीक है सर। Dr. Arpit, we have 25 minutes to go. Yes sir. Right. There is a question. I just take it. Yes, बोले ना। So this question is from Abhirup Agarwal ji. He's saying that my query is proper officer can demand for detailed documents and information such as bills, shipping bills, etc. in his power under section 70 and then proceed to issue scrutiny of returns notice under section 61. Instead of straight away demanding said information under section 61, isn't that a departure from section 61 which restricts proper officer to demand any information from a registered person unless he has sufficient reasons of discrepancy only on the basis of information available with him? देखिए यहाँ पे जो आपकी क्वेरी है वो एकदम सही है कि भाई जब सेक्शन 61 में एक स्पेसिफिक प्रोसेस दे रखा है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल कर दिया है, देन फर्स्ट द नोटिस हैज टू बी first the information of the discrepancy is to be communicated under section 61, then only section 73 or 74 should be initiated. पर यहाँ पे अगर देखें जो पहले के सेक्शन 70 जो CGST एक्ट का है उसके पैरामीटर प्रोविजन जो थे वो सेक्शन 14 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेक्शन 108 ऑफ कस्टम्स एक्ट में हम देखेंगे तो वहां पे सिमिलर प्रोविजन थे जो हमारे CGST एक्ट में सेक्शन 70 में है, दैट इज रिगार्डिंग पावर टू इशू समन। तो अगर समन क्या हम प्रोविजन देखेंगे सेक्शन 70 में तो वहां पे बोल रखा है कि wherever the proper officer considers necessary for production of documents or evidences or considers wherever necessary to issue summon to any person for production of documents or evidence, collection of evidences. तो वहां पे एक बहुत बड़ी पावर उनको दे रखी है कि अगर उनको लगता है कि कोई इंक्वायरी इनिशिएट करनी है तो इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए उनको डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं तो दे कैन वेरी वेल ऑल द डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 70। अब वहां पे सेविंग ग्रेस क्या हो सकती है कि वो जो समन का जो पावर है इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ रोविंग इंक्वायरी कि भाई मैं बैठा हुआ मेरे को कुछ भी नहीं पता तो मैंने उसको बिठा उसको बुला करके सीधा वहां से उनसे डॉक्यूमेंट मंगवा लिए। देयर हैज टू बी सम प्रायर इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द प्रॉपर ऑफिसर इज कंसीडरिंग नेसेसरी। और देखिए जो इंक्वायरी वर्ड है दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द CGST एक्ट, पर एक इनकम टैक्स एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विद रिलेशन टू सेक्शन 133(6) जहां पे उन्होंने इंक्वायरी वर्ड को डिस्कस किया हुआ है and where they have said that inquiry is separate than a proceeding. A proceeding is something which is carried out under the act and inquiry is something with wherein information is sought from a person on the basis of some existing information. Therefore जो सेक्शन 70 देखेंगे वहां पे कंसिडर्स नेसेसरी वर्ड लिखा हुआ है। तो जब भी लिटिगेशन में मैटर जाएगा तब चीज ये आएगी कि भाई जो सेक्शन 70 का नोटिस दिया गया था जहां पे इंफॉर्मेशन मांगी गई थी तो ऑन व्हाट बेसिस इट वाज कंसीडर्ड नेसेसरी एंड देयर at that time the officer would have to show that why he considered necessary that said information has to be brought. तो अगर उनके पास मान लीजिए कोई पहले से इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है पर वो रिटर्न से सीधे सीधे डिस्क्रिपेंसी वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो वहां पे जाकर के वो पहले 70 में नोटिस देंगे। वहां पे जब इंफॉर्मेशन आपके पास इंफॉर्मेशन उनके पास आएगी उसके बेस पे वो 61 या 73 में प्रोसीड कर सकते हैं। पर बैठे बैठे कि यार मेरे को उसके शिपिंग बिल को वेरीफाई करना है और मैं मंगवा लेता हूँ, दैट कैन नॉट बी डन थ्रू सेक्शन 70। यहाँ पे मैं सबको एक चीज बोला हूँ कि जहां पे भी वर्ड कंसिडर्स नेसेसरी, इन हिज ओपिनियन, deems it necessary, is satisfied, ये जहां पे भी वर्ड आते हैं that means there is the onus on the officer that wherever a proceeding is initiated under those section then the basis that why that proceeding was initiated that has to be satisfied by the officer। अगर मान लीजिए सेक्शन 70 में deems considers necessary वर्ड नहीं होता तो वहां पे सीधा ये आता है कि भाई ठीक है आप चाहो तो सेक्शन 70 में किसी को भी समन देकर के बुला सकते हो और उसमें डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हो। तो वहां पे सेक्शन 70 में कंसीडर नेसेसरी एक वर्ड है जो एसएससी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम रोविंग इंक्वायरी, पर अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है उसको बेस बना के वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है और इंफॉर्मेशन मंगा के सेक्शन 61 या 73 में प्रोसीड अहेड कर सकता है।
Right, sir. Thank you. Please carry on. Please carry on, sir. हाँ सर. So the SOP has been shared, Arpit ji, to you. You can take it up. वो आप स्क्रीन शेयर पे शेयर कर सकते हैं क्या? Okay, just hold on. हाँ. I just take up in the meantime couple of questions. One is notice under section 46 time limit can be extended. Notice under Section 46. हाँ. So I have can be extended. सर देखिए वैसे तो अगर हम देखेंगे तो वहां पे 15 दिन से ज्यादा का एक्सटेंशन की पावर नहीं दे रखी है. पर अगर हम दूसरा अगर इसी ये देखते हैं कि क्या ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है जहां पे टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं करी जा सकती है क्योंकि पावर नहीं है, तो वहां पे हमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है जहां पे उन्होंने बोला है कि सिंस इट इज अ प्रोसीजरल मैटर और इवन इफ द टाइम इज एक्सटेंडेड still the reply submitted by the concerned person would be found appropriate. तो वो एक मैटर ऐसा हो जाएगा जो लिटिगेशन में जाकर के आपको डिसीजंस कोट करने पड़ेंगे, पर ऑफिसर जनरली उस टाइम को एक्सटेंड नहीं करेगा क्योंकि वहां पे वो ये बोल के चलेंगे कि सर 15 दिन का समय है, 15 दिन में आपको फर्निश करना था एंड वी कैन नॉट एक्सटेंड इट. राइट सर. सर ये दिखा दिया है. लेट्स गो थ्रू द. So this is for SOP for the non-filers of return, which was issued by way of circular 129. ये आपको आगे करना पड़ेगा सर. अभी देखें. Yes. Section 43 of CGST read with Rule 68 requires issuance of notice in the form GST 3A to registered person who fails to furnish under Section 39, 40 or 45. Further, Section 62 provides assessment of non-filers who fails to furnish under Section 39 or 45, even after service of notice in the Section GST 3A, form GST 3A. ये Section 46 का उन्होंने 3A का नोटिस दे दिया. अब देखिए आप ये as such no separate notice is required to be issued for best judgment assessment under. As such no separate notice is required to be issued for best judgment assessment under Section 62, and in case of failure to file return within 15 days of issuance of GST 3A, the best judgment assessment and form ASMT 13 can be issued without any further communication. जो हमने बात डिस्कस करी थी कि भाई क्योंकि Section 62 वर्ड यूज कर रहा है proceed to assess the tax liability, that means Section 46 का टाइम लिमिट खत्म होने के बाद सीधे असेसमेंट पार्ट चालू होगा. There would be no further communication or initiation of proceedings. तो पहला इन्होंने जो एसओपी दी थी उसमें बोला था कि एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज दिया जाएगा 3 दिन के अंदर कि आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए. On the due date of furnishing return, the Section 39 is over. System generated mail or message would be given. 5 days after the due date of furnishing return, a notice in GST 3 shall be so point number second पे आ जाए पीयूष जी. Point number second here. Point number second नहीं थर्ड में जो सब क्लॉज 2 है ना वो वाला. थर्ड में नीचे जाए. हाँ नीचे जाए. फोर्थ में सेकंड पार्ट. Once the due date बस सर. Once the due date for furnishing return under Section 39 is over, a system generated mail or message would be sent to all defaulters immediately after due date to the effect. तो ये चीज आ गई, इनको ईमेल और मोबाइल ईमेल और मैसेज भेजा जाएगा. थर्ड में 5 days after the due date of furnishing return, notice in GST 3A shall be issued electronically to such registered person who fails to furnish return under Section 39, requiring him to furnish such return within 15 days. अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो पॉइंट नंबर 2 जो है सब पॉइंट 2 वो मेल और मैसेज की यूज बात कर रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली की बात कर रहा है. द पॉइंट व्हिच आई वाज एम्फसाइजिंग कि जो इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड है ये मोड क्या होगा, इन माय व्यू इट शुड बी ऑन द पोर्टल.
Now sub-point 4 says, in case the said return is still not filed by the defaulter within 15 days, the proper officer will proceed to assess the tax liability under section 62 to the best of his judgment, taking into account all relevant material on record which is available, and would issue GST ASMT 13, or the liability would be uploaded in DRC 07. 5 बोल रहा है, for the purpose of assessment of tax liability 62, the proper may take into account details of GSTR1, GSTR2A, e-way bill, or any other information available from any other source, including from inspection under section 71. जो हमने बात करी थी कि what is meant by information available on record, और अगर 30 पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है कि अगर 30 डेज में वो पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है कि अगर वो 30 डेज में वैलिड फाइल कर देता है तो जो भी ऑर्डर ASMT 13 में फाइल किया गया है वो विड्रॉ हो जाएगा. And however, the said return remains unfurnished within the statutory period of 30 days issuance of order in ASMT 13, then proper officer may initiate proceeding under section 78 and 79 for the recovery of the outstanding dues. उसके बाद पॉइंट नंबर 5 जो है न्यूमेरिकल 5, इट सेज कि मान लीजिए मैंने अपना GSTR 1 फाइल किया है, उसके बेस पे ऑफिसर चाहे तो वो ऑर्डर पास करके और सेक्शन 83 में प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट भी कर सकता है टू इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. अब यहाँ पे वापस अगर सेक्शन 83 देखेंगे तो सेक्शन 83 अपने आप में एक बहुत एक्सट्रीम प्रोविजन है, क्योंकि ये बोलता है कि इवन इफ द ऑर्डर हैज नॉट बीन पास्ड एंड द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग बिफोर द ऑफिसर, स्टिल दे कैन प्रोविजनली अटैच द बैंक अकाउंट. जनरली तो क्या होता है कि डिमांड होती है, डिमांड निकलती है, डिमांड के बाद अपील फाइल होती है, अपील में स्टे आता है, उसके बाद उसका ऑर्डर होता है, और फिर अगर ऑर्डर अगेंस्ट में आता है तो रिकवरी होती है. बट सेक्शन 83 गिव्स अ पावर कि मैं बिना डिमांड निकाले हुए भी आपका प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता हूं. So there it has been specifically stated that the reasons for the same has to be recorded. For numerical 6, for the proper officer would initiate action under 29(2) of CGST for cancellation in case where the return has not been furnished for the period specified in section 29. So the SOP tha, it is more or less what we have discussed during a slide. और जैसा हमने बोला था कोई स्पेसिफिक नोटिस नहीं है, सीधा सीधा जो होगा वो डायरेक्टली असेसमेंट होगा एंड असेसमेंट के बाद में रिकवरी होगी इन केस रिटर्न्स आर नॉट फाइल्ड विद इन 30 डेज. अब अगर हम देखेंगे तो ये सेक्शन चालू हो रहा था नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन सेक्शन 73 एंड 74. तो अब ये देखेंगे, हाँ मैं कर सकता हूँ. So I am taking one question, Arpit ji. So this is posted by Mr. Karan Jasuja. He's saying that if we read section 169 subsection 1, which talks about all kind of communication and orders within the act and within the rules as well, with subsection C, where lies the confusion of meaning of electronically when notices are received by email? So can you get his question? He's talking about 169. हाँ 169 is service of notice, पर 169 अगर हम देखेंगे, wait a minute. अब देखिए 169(1) जब बोलता है any decision, order, summons, notice or other communication under this act or rules made thereunder shall be served by any one of the following methods. 169C बोलता है sending a communication to his email provided at the time of registration or is amended from time to time or by making it available on the common portal. तब जो मैं चीज बोल रहा हूँ, what I am saying is nowhere it is written that whether clause C or clause D, out of these two, what is meant by electronic, whether merely sending on the email is electronic or uploading on the common portal is electronic. And that's why I have referred to various places where the word electronically was used.
And as we have seen that somewhere electronically has been used for email or mobile, somewhere it has been used for uploading on common portal. But taking a holistic way, and most of the places where electronically it has been used, it has been associated with the portal. Still, a clarification would be welcome, but we have a ground where the notice has been served on our email to challenge that where it has been stated that serving of notice on email is the service of notice through electronic, would be considered as electronically the notice has been served. The further thing is, when I upload the notice on common portal, a consequential communication is sent to my email ID and mobile number. That ensures that either of the way the assessee is communicated. क्योंकि देखिए जो email है वो email ऐसी चीज है जहाँ पे most of the assettees have not given their email, but they have given their mobile number. अगर देखेंगे तो मोबाइल नंबर पे भी अगर SMS आता है तो that is communicate होता है. तो उसी से ही अगर हम देखेंगे तो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस में आता है कि यार कॉमन पोर्टल पे कर दीजिए. तो देयर इज 3 मोड्स थ्रू व्हिच द नोटिस कैन बी कम्युनिकेटेड, आइदर थ्रू द पोर्टल, थ्रू द ईमेल और थ्रू द मोबाइल नंबर, सिंस देयर इज अ कॉन्सिक्वेंशियल सेंडिंग ऑफ द नोटिस टू मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. But the term lacks clarity in GST. हाँ अर्पित जी. हाँ जी. So I would be taking Mr. Karan to for the interactive discussion. Just hold on for some time. In the meantime, I just take one question from Mr. Virup Agarwal. He's saying that, sir, my next question is that like Section 147 of Income Tax Act, wherein AO is obligated to provide reasons to believe in course of assessment to SSC, is proper officer also obligated to share info available with him or discrepancy to register person during course of assessment before pronouncing the order? देखिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द असेसिंग ऑफिसर शेयर नहीं होगी. जो डिस्क्रिपेंसी है दैट हैज टू बी क्लियरली शेयर्ड. राइट सर. और हम जब सेक्शन 63 देखेंगे, जब हम सेक्शन 63 डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे जो आपने क्वेरी उठाई थी वो सेक्शन 63 के लिए लॉ ने उसको इनकलकेट किया है. Okay, so Karan ji, आप बोल सकते? Can you hear me? Yes. Yeah, so no, you can proceed with your question, sir. Yes. My question is, no, section 169(1) subsection C clearly says that this is applicable to rules as well. So when an email is received, how can we challenge it? It is legally valid. सर ये इलेक्ट्रॉनिकली मैं क्यों नहीं बोलूं कि ये पोर्टल वाला है लिखा हुआ है? No, it is option of the authorities, not option of mine. तो अच्छा, तो जहाँ पे आप DRC 07 देखेंगे कि it should be electronically uploaded through DRC 07, तो right. उसका मतलब क्या लूंगा मैं? No, वहाँ पे there is specifically mentioned, जहाँ पे rule में specifically is mentioned, then that process that has to be followed. Where there is no it is not mentioned, then we 169(1) will override. नहीं, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना कि जैसे GSTR 3A में इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, तो वहां पे तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है रूल 68 में, नोटिस इन फॉर्म GSTR 3A शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली. तो हम इस इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या लेंगे? नहीं, मेरा सिर्फ ये आइडिया था कि यू आर सेइंग कि हम नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं इफ वी हैव रिसीव्ड थ्रू ईमेल. सो माय इंटेंशन इज, 3A की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 3A की बात कर रहा हूँ. अच्छा, मैं सिर्फ 3A की मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हाँ, वहां पे तो किसी भी मोड से भेजेंगे तो दैट इज एक्सेप्टेबल. यस, मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ GSTR 3A की जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड लिखा है. हाँ, नहीं, अगर इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भी नहीं लिखा तो एनी मोड मोड डिपेंड्स अपॉन द अथॉरिटी. सर तो मैंने यही चीज तो बोली थी कि ASMT 13 जैसे हम देखेंगे रूल 100 सब रूल 1 में, तो वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ मोड ऑफ सर्विस के लिए, तो वहां पे सेक्शन 169 आ जाएगा, तो उसमें किसी भी मोड के थ्रू वो दे सकते हैं ASMT 13 को. पर जहाँ पे वर्ड इलेक्ट्रॉनिकली लिखा हुआ है वहां पे अगर मेरे को ईमेल से आता है नोटिस, तो दैट मींस मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ फॉर 3A.
Anyway, चलो ठीक है. But my contention is 169 when override that in that case where the कौन सा? clarification is नहीं, अगर तो इलेक्ट्रॉनिकली आप ये बोल रहे हैं कि 169 would override the specific no mode of service given in it जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली लिखा हुआ है हाँ वहाँ पे 169 वन विल ओवरराइड. करण जी मतलब हाँ, वैसे है कि पैनलिस्ट का या स्पीकर का एक डिफरेंट व्यू हो सकता है. anyway my interaction is okay but that's fine. हाँ, बात आपकी ठीक है. नहीं वो हो सकता है सर, और आई वेलकम इट कि भाई ये चीज आपने एक चीज को रेज करा है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी लिखा है तो 169 विल ओवरराइड द स्पेसिफिक मोड ऑफ सर्विस. बट देन आई डिफर इट, क्योंकि जहाँ पे लेजिस्लेचर को स्पेसिफिक चीज डालनी थी वहां पे उन्होंने डाली है, और अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है तब तो फिर क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखा है वहां पे वो मैनुअल सर्विस भी कर देंगे. चलो ठीक है. फिर वो COD में क्यों जाएंगे? आई गॉट योर पॉइंट. ठीक है, ओके, थैंक्स. 63 के लिए चलें सर आगे. यूजी सेक्शन 63. Yes, you can carry on. अब अगर देखते हैं तो सेक्शन 63 से असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्संस. So I'm just interrupting. I am asking all the audience to start raising their questions if they have, because we would be closing it in next 10 minutes. So we will take up all those questions in the coming 10 minutes. Thank you. सेक्शन 63 लेते हैं, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्संस. तो अभी तक देखा था 61 जो था इट वाज स्क्रूटनी एंड इट वाज एप्लीकेबल ओनली ऑन रजिस्टर्ड पर्सन वेयर द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड. 62 was applicable on registered person but in cases where the return has not been filed. Now comes 63 which is applicable on unregistered persons. तो अब अगर इसके लिए relevant rule अगर मैं देता हूँ तो it says rule 100 of CGA rules and applicable forms is ASMT 14 wherein again no mode has been prescribed for service of notice. DRC 01 summary of show cause notice which has to be electronically uploaded. ASMT 15 assessment order under section 63 again no mode prescribed, and DRC 07 summary of the order. So see ASMT 14 और 15 जहाँ पे mode prescribed नहीं है there section 169 would come into play, और जहाँ पे चीजें electronically लिखी हुई हैं then again it comes that it has to be uploaded through portal in absence of any clarification. Now coming to section 63 bare provision, it again starts with notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or 74, which is the same language as section 62. It says where it is applicable in two cases, where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so. तो अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, उस इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने मान लीजिए either seller and deals in goods, and for 17-18 he has shown a sale of say 45 lakhs in his IT return. अब जब वो इनकम टैक्स से इंफॉर्मेशन शेयर हुई GST अथॉरिटी के पास में, तो उन्होंने देखा कि इसका तो टर्नओवर जो है इट हैज क्रॉस्ड 20 लाख रुपीस. तो उन्होंने देखा कि in my view he is a person who has failed to take registration. Therefore in such cases the assessing officer would be moving ahead in section 63. ये तो वो केस हो गया जहां पे fails to obtain registration. अब दूसरा आता है whose registration has been cancelled under subsection 2 of section 29 but who was liable to pay tax. Section 29 pertains to cancellation of registration. वहां पे दो प्रोविजन है, सेक्शन 29(1) और सेक्शन 29(2), और सेक्शन 63 जो है वो 29(2) को केटर करता है, 29(1) को इंक्लूड नहीं करता. अगर हम सेक्शन 29(1) पे जाते हैं तो वहां पे 3 सिचुएशंस दे रखी हैं. तीनों सिचुएशन को अगर देखेंगे, द बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, ट्रांसफर्ड फुली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, अमालगमेटेड विद अदर लीगल एंटिटी, डीमर्ज्ड और डिस्पोज्ड अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ. मतलब यहाँ पे बिजनेस जो है परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो गया, या तो प्रोप्राइटर की डेथ हो गई या फिर अमालगमेशन हो गया या डीमर्जर हो गया. इफ देयर इज एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, अगेन उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने के कारण वो बिजनेस वहां तक बंद हो गया जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहा था,
और तीसरा है टैक्सेबल पर्सन अदर देन द पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। ये जो पार्ट है मैं 29(2) को डिस्कस करने के बाद में लूंगा। पहले 29(1) में उन्होंने ये दो ऊपर की जो दो कंडीशंस है दैट इज वेरी क्लियर कि व्हाई 29(1) हैज नॉट बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 63 बिकॉज द बिजनेस हैज बीन परमानेंटली डिसकंटिन्यूड or there is a change in constitution, that's why the business is discontinued under the previous constitution. Now coming to section 29(2), अगर उसमें हम जो भी जो सिचुएशन दे रखी हैं और जो हमारे को कॉमनली फेस करते हैं उसमें देखेंगे सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन 3 says any registered person other than a person specified in clause B, मतलब जो other than composition person has not furnished returns for a continuous period of 6 months। तो आप देखिए किसी जने ने रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने अपना रिटर्न मान लीजिए जुलाई 2019 से फर्निश नहीं किया है। जुलाई 2019 से फर्निश नहीं किया है और आज की तारीख में अगर ऑफिसर उसको कैंसलेशन का नोटिस देता है, उसको नोटिस देता है, तो फिर उसके सामने दो ऑप्शन है, या तो वो उसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल करे या इसको वो आज की डेट से कैंसिल करे। सेक्शन 29(2) दोनों को एम्पावर करता है। सेक्शन 29(2) प्रोवाइड्स पावर टू द प्रॉपर ऑफिसर टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट। तो मान लीजिए किसी ऑफिसर ने जुलाई 2019 से मैंने रिटर्न फाइल नहीं किए थे, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो आज की डेट जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 15 अप्रैल 2020, वो 15 अप्रैल 2020 को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है। अगर वो 15 अप्रैल 2020 को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो फॉर द पीरियड जुलाई 19 to 15 अप्रैल 2020 he can serve me a notice under section 62 for filing of returns because till 15 April 2020 I was a registered person। तो जहां पे मेरा आज की डेट से कैंसिल किया जाता है रजिस्ट्रेशन, वहां पे पुरानी डेट की प्रोसीडिंग सेक्शन 62 में कंटिन्यू होंगी और 63 में अगर कंटिन्यू करनी है तो वो 15 अप्रैल 2020 के बाद की होंगी। या फिर दूसरा है कि वो मेरा 1 जुलाई 2019 से कैंसिल कर देते हैं कि भाई इन्होंने 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं किए तो कैंसिल इट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। इन सच केसेस where a retrospective date has been taken for cancellation of registration, the proceedings, if the officer finds that the person was still liable to pay tax but the registration has been cancelled from 1st July 2019, so the proceedings after 1st July 2019 can be taken under section 63। तो सेक्शन 63 पे वापस आते हैं। तो टैक्स पहली कंडीशन है टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, दूसरा है हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29(2). हम सिंपलिसिटी के लिए मानते हैं कि अगर मैंने 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं किए थे और मेरा रेट्रोस्पेक्टिव डेट से अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो यहाँ पे सेक्शन 63 में वो नोटिस दिया जा सकता है। और उसके बाद आगे अगर देखेंगे द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच टैक्सेबल पर्सन। There again it says कि अगर ऑफिसर को दिखता है कि किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या 29(2) में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था किसी रजिस्टर्ड पर्सन का, द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी, स्ट्रेट अवे वो प्रोसीड कर सकता है फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पर यहाँ पे एक प्रोविजो दे रखा है जो मैंने नीचे रिप्रोड्यूस किया हुआ है, विच कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन provided that no such assessment order shall be passed without giving the person an opportunity of being heard। ऑफिसर को दिख गया कि वो टैक्सेबल पर्सन ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या उसका रजिस्ट्रेशन पहले की डेट से कैंसिल था, still he was liable to pay tax, but before make proceeding for conducting the assessment he has to serve a show cause notice as per the proviso। अगर 100 सब रूल 2 देखते हैं तो अब ये बोलता है प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस टू अ टैक्सेबल पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 63 इन फॉर्म जीएसटी एएसएमटी 14। अगेन कोई मोड नहीं लिखा हुआ है सर्विस का, containing the grounds on which the assessment is proposed to be made on best judgment basis। मतलब जो मेरे को ASMT 14 आएगा वो ऐसा नहीं आएगा कि आपकी लाइबिलिटी है,
आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो क्यों नहीं आपका बेस्ट जजमेंट कर दिया जाए? It would be specifically containing what are the grounds on which the assessment is being proposed to be made. तो जो अभी थोड़े टाइम पहले क्वेरी रेज करी गई थी कि सेक्शन 62 में क्या ग्राउंड्स देने पड़ेंगे कि उनको क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, वो सेक्शन 62 में रिक्वायरमेंट नहीं है, वो रिक्वायरमेंट सेक्शन 63 में है, जहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर नोटिस देते हैं, देयर द असेसमेंट जिन ग्राउंड्स पे किया जाएगा वो ग्राउंड्स उस नोटिस में उनको कम्युनिकेट करने पड़ेंगे. एंड शैल आल्सो सर्व अ समरी देयरऑफ इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01. तो अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को हु इज अ टैक्सेबल पर्सन उसको नोटिस दिया जाना है तो दैट वुड बी गिवन अंडर ASMT 14 along with the grounds and a summary would be issued in DRC 01. अब उसको देने के बाद उनको 15 दिन का समय दिया जाएगा टू फर्निश द रिप्लाई. वो जो भी रिप्लाई फर्निश करते हैं, अब यहाँ पे मोड ऑफ फर्निशिंग और रिप्लाई नहीं दे रखा है कि ऑनलाइन देना है या किसी फॉर्म के थ्रू देना है. आप चाहें तो सिंपल प्लेन पेपर पे भी एप्लीकेशन दे करके मैनुअली उनको दे सकते हैं. इफ एनी pass an order in form GST ASMT 15 and summary thereof shall be uploaded electronically in form GST DRC 07. ऑर्डर जो पास होगा वो ASMT 15 में पास होगा और उसकी समरी जो है वो DRC 07 में होगी. Coming back to the section. Dr. Arpit, message is coming that people are not able to see your screen. Not able to see the screen. Yeah. मनीष जी, अटेंडेंस का मतलब स्क्रीन से है या अर्पित जी के चेहरे से है? बिकॉज हमने अर्पित जी का जो वीडियो है स्पेसिफिकली बंद करवाया था बिकॉज ऑफ लो बैंडविड्थ. राइट. दीपक जी वो स्क्रीन कह रहे हैं जो प्रेजेंटेशन है. प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है इधर? मेरे को दिख रहा है बट नजर नहीं आ रहा. आई थिंक आपकी शेयरिंग बंद हो गई है. प्लीज चेक इट. नहीं, ये तो मैंने चालू कर दी है. एक मिनट, लेट मी चेक. हाँ, मुझे नजर आ रही है. I can also see, so maybe let people come back. Please carry on, sir. हाँ. तो also provision of section 63 says the property officer may proceed to assess the tax liability, but through the insertion of proviso, principle of natural justice has been inculcated and the notice has to be issued in ASMT 14, and after giving a time of 15 days of furniture or reply, the order has to be passed in ASMT 15. Now, to proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgment for the relevant tax period. Again, the word has been used best of his to the best of his judgment. पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे 62 और 63 में difference है. What 62 was saying is that the assessment should be conducted on the basis, a best judgment should be arrived on the basis of all the relevant material which is available on record or which has been gathered by the officer. But there is no such condition under section 63 कि आपको relevant material जो record पे है वो gather करना है या होना चाहिए तभी आप 63 में कर सकते हैं. ये ऐसा इसलिए है कि जब हम 62 की बात करते हैं तो वो assessee registered है, डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, गैदर करने की या ऑन रिकॉर्ड पे लाने की, जैसे GSTR 1, GSTR 2 है, ई-वे बिल्स, कुछ बहुत सारे हैं. पर जहाँ पे असेसी अनरजिस्टर्ड है वहां पे बहुत ही कम चीजें होंगी जो ऑन रिकॉर्ड होंगी या फिर असेसिंग ऑफिसर वो सेक्शन 63 में एब्सेंट है as compared to with section 62. But then again, whether absence of these words in section 63 gives an unfettered power to the officer for closing out the assessment कि भाई ठीक है इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड का इन्होंने कंडीशन तो डाल नहीं रखी है तो अपनी मर्जी से मैं कुछ भी डिमांड निकाल दूं. नहीं, अगेन there are decisions of honorable courts where they have said that exercising the power of best judgment, since it is a quasi judicial power, it has to be based upon certain logic, certain process, and on that process only the assessment can be conducted and demand can be generated on the basis of best judgment. I have shared certain judgments regarding this where it has been said that it where the section uses the word best judgment,
It does not give an unfettered power to assess the person to an estimate which is a pure guesswork. क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए कोई जना ये बोलता है कि a person was liable to be registered but he has not taken register under GST. That means उसके पास कुछ information तो है जहां से वो इस conclusion पे arrive हुआ है. तो सेक्शन उसमें कंडीशन नहीं बांध रहा है, पर जो लॉ जो प्रिंसिपल्स कोर्ट्स ने ले डाउन करे हुए हैं उसके बेस पे, इवन दो सेक्शन इज नॉट बाइंडिंग दैट ऑफिसर बट द लीगल प्रिंसिपल्स आर बाइंडिंग हिम, दैट देयर हैज टू बी समथिंग some working behind arriving at the amount on which assessment is concluded under section 63. तो जो मैंने वो जजमेंट इसमें शेयर किए हैं and which are more or less similar to section 62, so I would not be covering them in detail, but so best judgment assessment and the time limit is same as provided in section 62, that is period of 5 years from the date specified in under section 44 for furnishing of annual return for the financial year to which that tax paid not relates. तो 17-18 को अगर कोई unregistered person का assessment है, that can be completed within 5 years from the due date of annual return, which was 5th or 7th of February 2020. So it can be concluded up to 2025. With this, I conclude discussion on section 63. Yes, Piyush. Yes. So now I think we are left with only section 64. 64, 65, and 66. Okay. And, so yeah. So the time is not allowing me to continue this session further. So we would take those sections in the next session, which we would be planning. Okay. So probably we can conclude, and I have one question in front of me that I'll ask, and then we'll conclude this session. This question is asked by Mr. Rajiv, that on the ground of, I mean, it's more about the way the things are being done right now. He's saying that on the ground of retrospective cancellation, department is asking the assessees to pay tax, submit the paper returns, and then they will open the registration. So he's asking whether this method is correct as per law or not. देखिए अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे सुओ मोटो कैंसिल करा है डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे लॉ प्रोवाइड्स कि वंस द रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड यू कैन फाइल ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स, and if the returns are filed within a period of 30 days, you can submit an application for revocation of cancellation of registration. Okay. Law beyond the period of 30 days allow नहीं करता है for revocation of cancellation of registration. पोर्टल हालांकि आज के दिनों में अलाउ कर रहा है, पर लॉ डज नॉट अलाउ. तो आपको जैसा मेरे क्वेश्चन से समझ में आ पाया कि भाई कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, फिर वो बोल रहे हैं कि आप मैनुअल रिटर्न सबमिट करो, मैनुअल रिटर्न सबमिट करने के बाद में हम उसको रिवोक करेंगे. तो दैट इज प्रोसीडिंग नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ. रिवोकेशन का पावर एक्सरसाइज करने के लिए भी उनको आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करवाने पड़ेंगे, उसके बिना वो जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको रिवोक नहीं कर सकते हैं. अभी एक केस प्रेजेंटली हमारे साथ आया था जो मैं शेयर करना चाहूंगा रिवोकेशन के लिए, क्योंकि वो एक दिखाता है कि सिस्टम कहाँ पे क्या चीज हैम्पर करता है. There was one case where a registration was cancelled by the department suo moto under section 29. They asked us to file the return. The returns were filed by the assessee up to the due date, whatever date was prescribed. उन्होंने वो फाइल कर दिया and they moved an application for revocation of cancellation of registration. जब वो assessee ने मूव करी एप्लीकेशन, उसके बाद assessing officer ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी कि मेरे को आपकी इंफॉर्मेशन सबमिट करिए और उसके बाद मैं कैंसिलेशन को रिवोक करूंगा. जब उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी, that was the notice was served on the portal, but the assessee was not able to submit the information within the required time. Say the time limit was given up to 10th of April 2020, but the assessee was not able to furnish that information up to 10th April 2020. उसके बाद 11 तारीख को जब वो ऑफिसर अपने डेस्क पे गया, तब वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आया, टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फाइल फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. ही रिजेक्टेड द एप्लीकेशन. उसके बाद जब असेसी ने वापस से रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने की कोशिश करी, तो सिस्टम ने बोल दिया कि सिंस यू हैव एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन वंस,
तो यू आर नॉट अलाउड टू अगेन फाइल द एप्लीकेशन। उस केस में अब असेसी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, आइदर टू चैलेंज कि ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है लॉ में कि वंस एप्लीकेशन है रिजेक्टेड without considering the same on merits, it cannot be filed again, or file an appeal against the cancellation order. So this is a restriction or hampering given by the GST portal, which has to be taken into account by all of us. It was only shared for the benefit of all of us. I think Arpit, sorry I am interrupting here. I believe जो क्वेश्चन राजीव जी ने रेज किया वो अगेन सिस्टम से रिलेटेड ही है. I just explain with the help of an example. Let's say असेसिंग जो पीओ है उसने मेरी रजिस्ट्रेशन जनवरी 2019 से कैंसिल कर दी, राइट? अब मेरी जो रिटर्न्स है वो दिसंबर की भी पेंडिंग है, दिसंबर 2018, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि तकरीबन 7 महीनों की रिटर्न्स पेंडिंग है. अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि पीओ ने कैंसिलेशन 1 जनवरी 2019 से इफेक्टिव कर दी है, तो सिस्टम में इवन इफ आई लॉग इन एंड ट्राई टू फाइल रिटर्न्स, only the option to file return for December 2018 would be available. January onwards, since it has already been cancelled registration, तो सिस्टम मुझे उस पीरियड से फर्दर की रिटर्न फाइल करने की ऑप्शन ही नहीं देगा. तो आई बिलीव जो राजीव जी का क्वेश्चन है वो शायद इस संदर्भ में है, बिकॉज इसीलिए शायद पीओस जो हैं वो फिजिकल रिटर्न्स के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने की मेरे पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है. इवन दो लॉ सेज दैट आई कैन फाइल, but system is not allowing me to file those pending returns since the day from which I am supposed to file the returns are no more available on the system. And I believe Rajiv ji has also confirmed what I am saying. समझ में आ गया था. और काफी जगह ऐसा हो रहा है कि वो आज की डेट से कैंसिल नहीं कर रहे हैं, 3 महीने पहले की डेट से कैंसिल कर रहे हैं. तो आप एक देखें कि अगर मेरे को रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है और मेरा किसी एक पर्टिकुलर डेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया हुआ है, तो मेरे को सिस्टम में उसी डेट तक के रिटर्न्स फाइल करने हैं. आपकी बीच में आवाज चली गई थी, यू हैव टू रिपीट. हाँ, मैं बोल देता हूँ. अगर मेरा एक पर्टिकुलर डेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, तो मेरे को रिटर्न जो है वो उसी डेट तक के फाइल करके आई कैन फाइल द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. ऑफिसर मेरे को मैनुअली तो आगे के रिटर्न्स मंगा ही नहीं सकता. Once I file the returns up to that date, up to which my registration has been cancelled, and the registration is active, then I can again file the returns, pending returns up to June, in the example which was quoted by you. तो मैं जून तक के रिटर्न्स वापस फाइल कर दूंगा और तब वो ऑफिसर उनको देख सकता है. पर वो ये बोले कि नहीं, आप तो पहले हमको जून तक के रिटर्न्स मैनुअली दीजिए, फिर हम देखेंगे और फिर आपका रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे. तो प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा होगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर लीगली ऐसा पॉसिबल नहीं है. दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ. और जो हमारा प्रेजेंट यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ वो जिस दिन तक के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, जिस डेट तक के, वहां तक के रिटर्न फाइल करने के बाद में वो उसको चालू कर रहे हैं. और अगर हम देखेंगे तो भी वो चीज वहीं पे आती है कि मेरे को, आपने अगर 1 जनवरी तक का 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, तो मेरे को पहले वहां तक के रिटर्न फाइल करने दीजिए, मेरा रजिस्ट्रेशन चालू करिए, उसके बाद ही तो मैं उसके बाद के रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल होऊंगा. Yes, I think you have sufficiently answered. So with this we can rest this discussion for today, and I'm not seeing any further question being asked by any participant right now. So I would like to thank Dr. Haldia for sparing time. I think it's almost 2 hours he has been speaking. So I really thank you, sir, for sparing time and making use of this lockdown period for enrichment of knowledge of our members, right? Usually your voice is gone. Yeah, am I audible? Yeah, right. अभी मेरे इधर आ रही है. Right. So fine. So Manish ji, Piyush ji, आपकी आवाज फिर चली गई है. I will request Manish ji to take over the session, please. Yeah. Thank you, participants, for staying with us for such a beautiful deliberation by Dr. Haldia.
Any suggestions, any points which Deepak ji, Gaurav or Piyush you want to put in? Otherwise, we'll come to an end with vote of thanks to Dr. Haldia. I'm done with myself. Deepak ji? Yes. I think again net की connectivity का issue आ रहा है. Right. Right. So I have a couple of announcements to make, if you allow me, Piyush and Manish ji. yes, sir. Please continue. Tomorrow we are going to have another webinar on the topic of code of conduct, which is being taken up by a renowned faculty, Mr. C.V. Sajan, who not only deals in disciplinary matters, he also deals in, he is also a speaker on India's and bank audit and other aspects of audit. So we have requested him to share his wisdom with all of us tomorrow on the topic of code of conduct. It will be from 5 p.m. onwards, and webinar meeting ID will be shared with all of you tomorrow. Maybe I will try to share it today itself. Also on Saturday, we are going to have another Rubaru session with CEO of a 2000 crore listed company, who will be sharing his journey from a student to a CEO of a listed company, what kind of struggle he has to face, or in fact the complete journey. So I will request, if you have any members in the industry or any colleague in your industry to kindly join us and share your question, and he will try to answer all of your questions on Saturday. That session will be from 3rd p.m. onwards. And with this, I will request Gaurav Garg if he is present. Gaurav ji, are you present? I believe he has left. Piyush ji, you may take it over. Yes, fine. So during this lockdown period in FTAP, we have decided to conduct webinars to keep our members enriched from both the technical as well as non-technical aspects. So this Rubru session is something which is unique we have started, and I would request everyone to attend it, and I'm sure you would be looking for more such kind of session in the time to come. With this, I thanks again Dr. Haldia to spare time. And I feel that although we are discussing this particular subject right now, but more the notices would start coming. His PPT would be looked after by most of our audiences. And since we have a recording available of this webinar, I'm very sure that it would be very helpful for all our participants and the members. So thank you, sir. And we will share the PPT once this is over. So we will share the PPT later on with the members. Yeah, it will be shared in the WhatsApp members group only. Thank you. Okay. Thank you very much, Piyush ji. Thank you, sir. Thank you.